Assalamualaikum students. Illustration number 5. Given below is the balance sheet of Vaishali, Madhuri and Menika, who were sharing profit and losses in the ratio of 3:3:3. Balance sheet as on 31st March 2019. First liability side, creditor 10,500, bank overdraft 5,000, general reserve 12,000. Capital account Vaishali 28,700, Madhuri 31,800, Manasi, so actual name is Mansi 30,000. Now listen students, question में वहाँ पे दिया हुआ है वैशाली, माधुरी एंड मेनिका, बट एक्चुअल में इट्स नॉट अ मेनिका, इट्स मानसी. ओके, नाउ कम टू असेट साइड. कैश 19,500, debtors inner column 16,000, less RDD 2,000, so outer column 14,000, furniture 15,000, machinery 40,000, motor car 25,000, profit and loss account 4,500, and balance sheet total is 1,18,000, 1,18,000. Vaishali retired on 1st April 2019, means first day of the year, from the firm on the following terms. 1. Furniture to be valued rupees 14,000, machinery at rupees 38,000 and motor car rupees 23,800. Second, RDD maintained 5% on debtor. Next, third, goodwill of the firm valued rupees 15,000. However, only Vaishali's share in it is to be raised in the books. नेक्स्ट, गुडविल का क्या है कि गुडविल जो है कितना वैल्यू हुआ 15,000, जिसमें से वैशाली ने सिर्फ अपना शेयर ली, बाकी गुडविल फर्म में एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट, अ पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज़ 10,000 बी मेड टू वैशाली, मीन्स वॉट, हमें वैशाली को जो है 10,000 रुपीज़ कैश में देना है, एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, और जो भी बैलेंस है वैशाली का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है. दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है. ओके, सो वी डू अ सॉल्यूशन एज पर क्वेश्चन वाइज. ओके, सो फर्स्ट कम टू सॉल्यूशन. हेडिंग इन द बुक ऑफ द फर्म, revaluation account. Next, partners capital account and balance sheet as on 1st April 2019. So we start through balance sheet. Number 1, on liability side, creditors 10,500, same. Right, on balance sheet liability side, creditors 10,500. Next, bank overdraft 5,000, again balance sheet liability side, bank overdraft 5,000. Next, capital account Vaishali, Madhuri and Manasi. So this amount transferred to partners capital account, credit side, we write by balance brought down. On Vaishali's account 28,700, on Madhuri account 31,800, on Mansi's account 30,000. Okay, liability side is over. Come to asset side. Number 1, cash 19,500. So there is an adjustment on cash, so we write in bracket cash, bracket में लिखेंगे 19,500. Next, debtors, there is an adjustment on debtors, so we write in inner column on asset side debtors 16,000. Next, furniture 15,000, again there is an adjustment on furniture, so we write on asset side inner column furniture 15,000. Next, machinery, there is an adjustment on machinery, so we write in inner column machinery amount rupees 40,000. Next, motor car, again there is an adjustment on motor car, so we write in inner column on asset side 25,000. And last, profit and loss account, means
इट्स एन लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का लॉस है. सो वी राइट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड वी राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and these 4500 distributed amongst the partner as per their profit sharing ratio, and the profit sharing ratio is 3:3:3. So in other word we can say profit sharing ratio is equal. So we write profit and loss account, Vaishali account 1500, Madhuri account 1500 and Mansi account 1500. Okay, now balance sheet is over. Now come to adjustment. On 1st April 2019, Vaishali retired. Means what? Opening day of the current year, Vaishali जो है retire हो रही है. On the following terms, number 1, furniture to be valued rupees 14,000. वैसे स्टूडेंट फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 15,000, अभी कितनी हो रही है 14,000. सो 1,000 इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन. सो बैलेंस शीट असेट साइड क्या करेंगे, फर्नीचर में से लेस डेप्रीसिएशन, inner column 1000. So 15,000 minus 1000, outer column 14,000. This 1000 is a loss for business. Transfer to revaluation account debit side, लिखेंगे to furniture 1000. Okay. Next machinery 38,000. On balance sheet asset side we write machinery and the machinery amount is 40,000, लिखेंगे less depreciation 2,000. So outer column 38,000. Second effect, revaluation account debit side to machinery 2000. Next motor car 23,800 and motor car value is 25,000. Again on balance sheet asset side लिखेंगे less depreciation 1,200 and outer column 23,800. This 1,200 is a loss for business, so we transfer to revaluation account debit side, लिखेंगे to motor car, outer column 1,200. Okay. Next adjustment number 2, RDD to be maintained at 5% on debtor. RDD कितना मेंटेन करना है, ओनली 5%. सो एक्चुअल डेटर अमाउंट इज 16,000 और लिसन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमने RDD कितना निकाले हैं 2,000. ओके, और एक्चुअल में कितने निकालनी है, ओनली 5%. सो 16,000 का 5% कितना होगा. तो फर्स्ट देखते 16,000 का 10% होता है 1,600. सो 5% कितना होगा, ओनली 800 रुपीज़. तो लिखेंगे लेटर्स में लेस 5% RDD, इनर कॉलम 800, आउटर कॉलम 15,200. ना लिसन, अभी हमने RDD कितना निकाला थे 2,000 रुपीज़, जबकि RDD एक्चुअल में कितनी है, ओनली 800 रुपीज़. सो 2,000 माइनस 800, सो कितना बचा 1,200. इट्स आवर प्रॉफिट. मतलब हमने RDD एक्स्ट्रा निकाले थे जबकि RDD इतनी थी ही नहीं. मतलब हमने 2,000 रुपये RDD निकाले थे जबकि RDD सिर्फ 800 रुपये थी. मतलब 1,200 रुपये हमारा प्रॉफिट है. सो वी राइट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय RDD 1,200. Next adjustment, goodwill of the firm to be valued at rupees 15,000. However, only Vaishali's share is to be raised in the book. गुडविल कितना वैल्यू हुआ है 15,000, जिसमें से वैशाली जो है सिर्फ अपना शेयर ले रही है. ओके, सॉरी, वैशाली शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक. मीन्स वैशाली की शेयर ही हमें सिर्फ बुक में रेज करना है, मतलब बताना है. ओके, सो फर्स्ट गुडविल इज टेकन बाय वैशाली. सो वी राइट on partners capital account credit side लिखेंगे by goodwill and Vaishali's account we write 5,000. okay, by goodwill and Vaishali's column we write 5,000. second effect, balance sheet asset side we write goodwill and amount rupees 5,000. means हमने सिर्फ वैशाली का ही शेयर बुक में रेज्ड की. and last, a part payment of rupees 10,000 is to be made to Vaishali and the balance is transferred to her loan account. means 10,000 रुपीज़ जो है वो वैशाली को कैश में देना है, बाकी सारा बैलेंस उसके
लोन में ट्रांसफ़र करना है। सो फर्स्ट वी राइट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश एंड वैशाली कॉलम में राइट ₹10,000। अब कितना बैलेंस रिमेन है उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स की टोटल करेंगे। ओके, फर्स्ट revaluation account total. So revaluation account debit side is higher than the credit side and debit side total is 4,200. These 4,200 total we write on both sides, 4,200, 4,200. Out of debit side total we deduct credit side total, and credit side there is only one total, 1,200. So 4,200 minus 1,200, so we have 3,000 loss. So write by partners capital account, in bracket we write loss, and loss should be transferred to partners capital account as per their profit sharing ratio, and the profit sharing ratio is equal. So we write Vaishali 1,000, Madhuri 1,000, Manasi 1,000. This loss transfer to partners capital account debit side we write to a revaluation account, in bracket we write loss, Vaishali account 1,000, Madhuri account 1,000 and Manasi account 1,000. ओके, अब लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 10,000 टू सो ट्रांसफ़र करना है, कैश में हमने दे दिए, एंड बैलेंस कैसा देना है, लोन से देना है. सो फर्स्ट वी क्लोज वैशालीज अकाउंट. वैशालीज अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज हायर देन द डेबिट साइड टोटल and credit side total is 37,700. This total we write on debit side 37,700. Out of credit side total we deduct all the debit side total, so the last balance is 25,200, and this balance we transfer to Vaishali's loan account. So we write on partners capital account debit side to Vaishali's loan account amount 25,200. Second effect, balance sheet liability side we write Vaishali's loan account 25,200. Okay, now Vaishali's chapter is closed. Now come to Madhuri. Madhuri's credit side total is 35,800 and Mansi's credit side total is 34,000. These both total we write it on debit side 35,800 and 34,000, and credit side total is higher than a debit side total, so we deduct all debit side totals from credit side total. Okay, so 35,800 से पूरा माइनस करेंगे तो बचता है 33,300, एंड 34 मानसी में से पूरा माइनस करें तो बचता है 31,500. So we write to balance carried down, and these total we transfer to balance sheet liability side capital. Madhuri 33,300 and Mansi 31,500. Now all the posting have been done and all the adjustment have been done. Only one adjustment is left, that is cash. हमने कैश ब्रैकेट में कितना लिखे थे, 19,500 लेस 10,000 जो हम वैशाली को दे रहे हैं. So outer column 9,500. Okay, now we do a final total and our balance sheet is tally, and tally amount is 1,05,500, 1,05,500. Okay, thank you students. Assalamu alaikum.